Now let us see that how you can change color of a J-frame or any component displayed on the J-frame. In fact, for this purpose, you can use the color class, and this class is already available in java.awt package. And a lot of predefined colors are also available there. You can use these colors, or you can define your own color as well to specify that which kind of color you want to apply as a background or as a foreground. Let us see that how you can apply colors on J-frame or any component displayed on your J-frame. For example, this is a list. The default background is white and the default foreground is black. Foreground color is a color applied on the text of that component. इस कलर में जो इस लिस्ट का foreground color है वो black है, जो basically इसका text color है. इसका जो background है that is white. If you want to change the background or foreground, then you can use the properties window. This is the background property. अगर इसको मैं यहाँ पे click करूँ, then these are the available colors. You can apply any color जो कि आपको नजर आ रहे हैं. For example, I want to apply the yellow color, and after clicking OK, you can see the background has been changed, but still the foreground is black. अगर मैं इसको foreground को change करना चाहूँ, this is the foreground property. अगर मैं इसको change करना चाहूँ, suppose I want to make it red, तो इसको मैं यहाँ से select करके click कर सकता हूँ. You can see the foreground is now red and the background is yellow. So in this way, you can make changes to any component. फॉर एग्जाम्पल एक कंपो बॉक्स था, मैं इसका जो बैकग्राउंड हूँ लेट्स से कि वो मैं चेंज कर लेता हूँ इस कलर में, और इसका जो फोरग्राउंड है वो लेट्स से कि मैं चेंज करता हूँ ऐसा ब्लू फॉर एग्जाम्पल. अगर इसको मैं यहाँ से अभी रन कर लेता हूँ तो यू कैन सी द चेंजेस. ये हमारे पास जो हमने वहाँ पे कलर सेलेक्ट किए थे वो कलर्स यहाँ पे आपको इस कंबो बॉक्स में नजर आ रहे हैं. सो इन दिस वे इन फैक्ट यू कैन चेंज कलर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑन अ जे फ्रेम. इवन हमारे पास जे फ्रेम है, अगर आप इसका भी कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट फॉर दिस यू नीड टू राइट सम कोड. अगर मैं इसके सोर्स में चला जाता हूँ, इसके जो कंस्ट्रक्टर है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कोड चेंज लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज इन फैक्ट गेट कंटेंट में डॉट सेट बैकग्राउंड. यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज इसको मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ. फर्स्ट मेक श्योर हमारे पास जो AWT पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए. इफ दिस इज देयर देन इट शुड वर्क. एंड दिस इज द बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वेरी गुड लुकिंग, लेकिन in this way you can change the background of JFrame as well.